Good morning, students. Our next topic is proportion. So, see, children, look at the following examples. First one, the ratio of rupees 12 to 16. Okay, so the ratio of rupees 12 to 16 equal to 12 by 16. Okay, now solve 4 3s are 12 and 4 4s are 16. It comes 3 ratio 4. Okay, second one is given the ratio of 6 pencils to 8 pencil. Okay, equal to 6 by 8. Okay, solve 2 3s are 6 and 2 4s are 8 or 3 ratio 4. So see, children, the ratio of rupees 12 to 16, it comes 3 ratio 4. The ratio of 6 pencils to 8 pencil, it is also comes 3 ratio 4. Okay, so from the above examples we find that each of the ratios 12 ratio 16 and 6 ratio 8 is same. Okay, 3, it means that is 3 ratio 4 and 3 ratio 4 is same as 3 ratio 4. It means the ratios 12 ratio 16 and 6 ratio 8, they are in proportion, they are equal. Okay, that is 12 ratio 16 equal to 6 ratio 8. So such an equality of two ratios is called a proportion. Okay, thus an equality of two ratios is called a proportion, and we say that the four quantities are in proportion. In general, four quantities, suppose four quantities are given A, B, C and D. They are said to be in proportion if A ratio B equal to C ratio D. Okay, it means if the value of A upon B equal to C upon D, it means then they are in proportion. Okay. This proportion is also written as A ratio B proportion to C ratio D. Okay, it is read as A is to B is as C is to D. The symbol, okay, this stands for is as. So the four quantities A, B, C and D, they are said in proportion, are called its terms. Okay, A, B, C and D, they are called its terms. Okay, they are called its terms. So children, A, the first and the fourth term. Okay, this is the first term, this is the second, third and fourth. So first and fourth term, they are called the extreme terms. Okay, and B and C, they are called the middle terms or mean terms. Okay, so if A, B, C and D are in proportion, then we write as A upon B equal to C upon D. Okay, and also if the product of extreme term equal to product of means term, then they are in proportion. Okay, so children, our exercise is based on proportion. So see exercise 9.2. First question is given. Check whether the given two ratios form a proportion or not. Okay. See the first one, 4 ratio 6 and 12 ratio 18. ओके अब देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है. तो आपको दो चीज़ें मालूम है. एक तो आपको मालूम है कि सपोज 4 टर्म्स आर गिवन. जैसे यहाँ पे 4 टर्म्स आपको दिया 1 2 3 4. ठीक है, आप 4 रेशियो 6 को सॉल्व करेंगे, 12 रेशियो 18 को. मतलब अगर आप ए अपॉन बी की वैल्यू सी अपॉन डी. ए अपॉन बी का मतलब दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, इट मीन्स देन दे आर इन प्रपोर्शन. ओके, और सेकेंड मेथड क्या है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, देन दे आर इन प्रपोर्शन. ओके, तो देखिए फर्स्ट वन 4 ratio 6 and 12 ratio 18. तो सॉल्व 4 ratio 6. 4 ratio 6 मीन्स 4 by 6. ठीक है, रेशियो को आप इसी तरीके से लिखते हैं ना, पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में. अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया. 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6. 2 by 3. 2 by 3 मीन्स 2 ratio 3. ओके, देन सॉल्व 12 ratio 18. 12 ratio 18, इसको भी आपने सॉल्व किया. इट इज़ ऑल्सो कम्स 2 by 3. 2 ratio 3. So both the ratios are equal. A upon B equal to C upon D. Okay, both the ratios are equal. It means the given ratios are in proportion. Okay, और आप उसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म. ठीक है, तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म. Extreme terms are first and fourth term. You know the extreme term. So find the product of first and the fourth term.
4 into 18, 4 into 18 is 72. Okay, and product of middle term 6 into 12. So 6 into 12, it is also come 72. Okay, so the product of extreme term equal to product of middle terms, it means then they are in proportion. Okay, okay. See the second part. 15 ratio 45 and 40 ratio 120. Okay, so solve 15 ratio 45, तो 15 by 45. Okay, आपने इसको solve किया, simplify तो आपको करना आता है ना, तो it comes 1 by 3. Okay, 1 by 3 means 1 ratio 3. Then solve 40 ratio 120, 40 upon 120. देखो 110 is cut, 4 ones are 4 and 4 ones are 4, 4 threes are 12. 1 by 3, so 1 ratio 3. Okay, so see, both the ratios are equal. It means the given ratios are in proportion. Okay, then next part, see the next part, third. 14 ratio 4 and 18 ratio 6 solve. 14 ratio 4 solve किया इसको. 14 ratio 4 means 14 by 4. So 2 sevens are 14 and 2 twos are 4. It comes 7 by 2. Okay. Then solve 18 ratio 6. So 18 by 6. It comes 3 upon 1. ठीक है. See children, they are not equal. A upon B is not equal to C upon D. Okay. ये दोनों, इनका पार्ट को आप देख लो. इसकी जो वैल्यू आई है और इसकी वैल्यू आई है, वो दोनों आपकी डिफरेंट है. ओके, दे आर नॉट इक्वल. इट मीन्स द गिवन रेशियोज डू नॉट फॉर्म अ प्रपोर्शन. ओके, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई है 7/2 और यहाँ पे 3/1 आई है. ठीक है, दे आर नॉट इक्वल. इट मीन्स द गिवन रेशियोज डू नॉट फॉर्म अ प्रपोर्शन. Okay, so clear first question. So children, fourth part is your homework. Okay, then see question number 2. Question number 2 is write true and false. 60 first part, 16 ratio 24 equal to 20 ratio 30. तो देखो second part को, तो सेम मेथड है, इसमें भी वही करना है. अगर वो प्रपोर्शन में आ जाता है तो ट्रू है. ठीक है, और अगर वो प्रपोर्शन में नहीं आता है तो फॉल्स होता है. तो देखो सॉल्व 16 रेशियो 24, तो 16 by 24. इसको सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी वैल्यू जो आती है वो 2/3 आती है. ठीक है, देन सॉल्व 20 रेशियो 30, तो 0 0 का 2/3. तो देखो बोथ द वैल्यूज़ आर इक्वल. ये वाली वैल्यू और ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ गई. इट मीन्स 2/3 और 2/3 आया. इट मीन्स इट इज़ ट्रू. ओके, इफ़ द वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल देन इट इज़ फॉल्स. ओके, और देखो सेकेंड ऑल्टरनेटिव मेथड भी मैम ने यहाँ पे लिखा है. तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स देन दे आर इन प्रपोर्शन. ओके, तो आपके पास क्वेश्चन था 16 रेशियो 24 प्रपोर्शन. दिस इज द सिंबल ऑफ प्रपोर्शन. ठीक है, 20 रेशियो 30. तो फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म. 16 into 30, it comes 480. Then find out the product of middle terms. 24 into 20. Okay, 480. See, both the values are equal. Product of extreme term equal to product of middle term. Okay, so it means it is true. So children, clear? तो आप कोई से भी मेथड को फॉलो करके फाइंड आउट कर सकते हो कि वेदर द प्रोपोर्शन इज ट्रू या और फॉल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन. ठीक है, तो अब आपको मालूम हो गया प्रपोर्शन का मतलब क्या है, कि इफ़ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स टर्म देन दे आर इन प्रपोर्शन. ओके, और सेकंड मेथड क्या है कि सपोज 4 टर्म्स आर गिवन, तो इफ़ A upon B इक्वल टू C upon D देन दे आर इन प्रपोर्शन. ओके, तो सी क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट पार्ट 12 ratio 12, 16, 6 and 8. This is the first term, second term, third term and fourth term. Okay, so solve 12 ratio 16. 12 ratio 16, it comes 3 ratio 4. Okay, then solve 6 ratio 8, it comes 3/4. So see, the values are equal. ठीक है, the ratios are equal. It means 1/2 equal to 1/2. The given ratios 3 ratio 4. ये है 3 ratio 4 and 3 ratio 4. Okay, 3 ratio 4. So the given ratios are in proportion. Okay, see the fourth part, 18, 9, 10 and 5. Okay, check the given ratios, they are in proportion or not. Okay, so first solve 18 ratio 9. Okay, and then after solve 10 ratio 5.
तो 18:9 it comes 2:1. Then 10:5 it comes 2:1. Okay, so equal, the values are equal. It means the given ratios are in proportion. Clear? Question number 3.